Good evening, ladies and gentlemen. I am Rana Aryan and I will be your moderator for today's conference call. A warm welcome to Make Refrigeration Ltd's Q1 FY27 earnings and investor interaction for the quarter ended June 30, 2026. We are pleased to have with us investors, analysts, shareholders, media representatives and other stakeholders. Make is an established provider of industrial and commercial refrigeration and cold chain solutions with offerings across cold rooms, commercial and industrial refrigeration, transport refrigeration, ammonia refrigeration, PF panels and cold storage infrastructure and allied solutions. The company serves sectors including food processing, agriculture, pharmaceuticals, healthcare, hospitality, retail, dairy, seafood and logistics. The company has also created significant value for its shareholders over the years, with the stock delivering over 3,000% returns over the past 5 years. The company enters this phase with a strong revenue momentum and an important strategic development. The proposed rupees 180 crore investment by Japan's Galilei Holdings Company Limited and the proposed strategic joint venture. So before we begin, please note that certain statements made during this interaction may be forward-looking and are subject to risk, uncertainties and assumptions. Actual results may differ. Participants are advised to refer to the company's regulatory filings for detailed information. So we have our management team with us, Mr. Chandrakant P. Patel, Chairman and Managing Director, Mr. M. Srinivas Reddy, Chief Executive Officer, Mr. Nikhil Bhatt, Vice President Strategy, Mr. Ankit Patel, Chief Financial Officer, Mr. Mandar Desai, Company Secretary and Compliance Officer. The format for today's session is the management will cover Q1 FY27 performance, financial priorities and business strategy, followed by an interactive Q&A and closing remarks. So, in the opening, we'll have our CEO, Mr. M. Srinivas Reddy, followed by financial performance by our CFO, Mr. Ankit Patel, business and strategy update by our VP, Mr. Nikhil Bhatt, investor, and then we'll have Q&A session, and finally we'll have closing remarks by our CMD, Mr. Chandrakant P. Patel, and vote of thanks by the company secretary at the end of the conference. This conference call is being recorded. Questions are welcome in Hindi or English. With preference to Hindi, we prefer that you ask question in Hindi. For verbal questions, please use the microphone icon, which is 7th from the left. Written question may be submitted through the question icon, which is you see the question 5th from the right. If you look at, please keep your questions concise and limit yourself to two initially so that more participants can be accommodated. With that, let us begin. I invite Mr. M. Srinivas Reddy, Chief Executive Officer of Make Refrigeration, to share his opening remarks. Over to you, Mr. Reddy. Thank you, Aryan. Good evening, ladies and gentlemen. Thank you for joining Make Refrigeration's Q1 FY27 earnings interaction. Q1 FY27 began with a strong revenue momentum. Consolidated revenue from operations increased about 60% year-on-year to rupees 178.88 crores from rupees 111.50 crores in Q1 FY26. This builds on FY26 total revenue of rupees 668.20 crores, which is the company's highest annual revenue to date. Growth was supported by healthy demand across refrigeration and cold chain segments, with newer categories such as chest freezers and continuous panels gaining excellent market acceptance. The key issue for us now is the profitability. Higher commodity and raw material costs, together with investments made to build future capacity and capabilities, impacted margins in the quarter. Our immediate focus is therefore on capacity utilization, operating efficiency, product mix, and cost management. As the assets and capabilities built over recent quarters are utilized more efficiently,
and effectively. We expect operating leverage to improve going forward. A significant development is a proposed rupees 180 crore strategic investment by Galilei Holdings of Japan. We view this as a strategic partnership that can combine Galilei's excellent technology and global expertise with IceMake's manufacturing capabilities and Indian market presence and, of course, execution strength. The proposed 60-40 joint venture with Galilei holding 60% and IceMake holding 40 will initially focus on commercial refrigeration products such as the commercial upright and table refrigerators. The proposed capital will also support capacity expansion and modernization, the JV, Center of Excellence and Development and Testing Laboratories, balance sheet strengthening, and selected growth opportunities. Our approach remains disciplined. The objective is profitable, sustainable, and scalable growth, supported by strong execution, better utilization, improved margins, and careful capital allocation. With that now, I hand over to our CFO, Mr. Ankit Patel, for the detailed financial review. Thank you. Thank you, Reddy sir. Good evening, everyone. I will focus on key financial numbers of Q1 FY27 and company's financial priorities. Consolidated revenue from operations for the quarter was 178.88 crore, up by 60.4% year-on-year from 111.50 crore. Profitability, however, remained under pressure. EBITDA was rupees 3.09 crore versus rupees 4.53 crore in Q1 FY26, with EBITDA margin at 1.7% compared to 4.1%. Profit before tax was a loss of 2.23 crore versus 1.84 crore loss previously, while profit after tax was a loss of 1.65 crore versus 1.47 crore in corresponding period. The main margin pressure was elevated mainly due to commodity and raw material prices and the costs related to investment in capability and organizational capabilities. Financially, our priority is to convert the strong top-line momentum into a healthier profitability. We are working on capacity utilization, cost discipline, product mix, and operating efficiencies, with high utilization expected to supporting operating leverage. Our proposed Galilei transaction, the rupees 180 crore investment, is proposed through a preferential issue, with an additional 10 crore proposed to be raised from other investors. The funds are intended for capacity expansion and modernization, the proposed JV, completion of corporate office and Center of Excellence, Development and Testing Laboratory, repayment of certain borrowings, and selective inorganic growth. The capital deployment will be phased and disciplined with a focus on strengthening the operating platform and generating sustainable returns. The transaction remains subject to applicable approvals and customary closing conditions. In conclusion, our three financial priorities are sustained revenue momentum, improve margins, and operating cash generation, and deploy capital prudently while strengthening the balance sheet. Now I hand over to Mr. Nikhil Bhatt, Vice President Strategy, for the business and strategy update. Thank you. Thank you, Ankit ji, and good evening, everyone. I will focus on the business mix, market opportunities, and the strategic directions for the next phase of growth. IceMake is building a broader refrigeration solutions platform across commercial refrigerations, cold chain, food processing, hospitality, pharmaceutical, retail, and industrial applications. Newer categories such as chest freezer and continuous panels are also gaining traction.
Our strategy has four priorities. First is capacity to expand and modernize manufacturing capability to support demand and improve service levels. Products, broaden the portfolio and build sustainable positions in attractive segments. Technology, strengthen product development through the Center of Excellence and Development and Testing Laboratories. And fourth is the market reach to deepen our presence across India's refrigeration and cold chain ecosystems. As mentioned by Mr. Reddy earlier, the proposed Galilei partnership is strategically important because it combines complementary strengths. Galilei's refrigeration technology, product development and manufacturing expertise with Ice Make's Indian market presence, manufacturing platform, customer relationships and execution capabilities. We expect the benefit to build progressively as investment, product development, manufacturing setup and market development take place. Investors should therefore view the initiative with a long-term perspective. The objective is not only simply to add capacity of products, but to build businesses capable of generating sustainable revenue, stronger margins and attractive returns on capitals. Looking to the order book on hand is about 220 crore plus. We are quite confident to achieve our goal for the current financial year. Thank you. I will hand the session back to the Aryan for the investor and analyst question and answer. For Q&A, you can just, this icon, there is this icon which is mic icon, microphone icon. You can just put there and we will take your question. We'll unmute you, okay? So we have first question from Kanishk Gupta. I will just unmute you, sir. You can go ahead with your question. Kanishk, you can also type your questions in case if you have any question. I will just read one question that I have. So the first question is from one of the investor from Ahmedabad. He's saying company has reported a revenue of 178 crore in Q1 FY27. That is 60% growth from FY26 Q1. So if I take this revenue split in FY26 percentage wise for each quarter and do a rough mathematical calculation, the FY27 revenue comes to 1000 crore. Can you confirm if this is possibility while maintaining EBITDA level of 8 to 8.5%? For simplicity of understanding, if you can, sir, over to you. So what is saying actually, if FY27 Q1, if you have 178 crore, since Q1 normally contributes 16 to 16.7% of the full year revenue, can we reverse calculate the implied full year revenue for FY27? Yeah, the question is valid, of course. We have delivered excellent growth of 60% in Q1. But what investor has to note is that the last year Q1 base was actually low in terms of the new businesses. So if you look at the chest freezers and continuous panel business was the first year from them. So the base was very low for them. So obviously we posted excellent growth in the low base. Going forward, our guidance for the year continues to be the same as stated before. But having said that, we will look at every possibility or opportunity to maximize the revenue. As for the EBITDA guidance is concerned, currently Q1 we are impacted on the profitability. We are giving a guidance of around 6 to 6.5% for the whole of the year this year. All right, sir. Okay, so the question from Kanishka is, first, despite the price increase of 10 to 11% that management had indicated, and the fact that a substantial part of the distribution and channel investments were already made during FY26, Q1 FY27 EBITDA margins came in at only 1.7%. Could you help us understand the key factors behind this significant margin pressure in Q1, apart from raw material prices largely offset by our price hikes? This is the question from Kanishka. Mainly the issue was related to raw material price hike only. Okay. Couple of times we have increased our prices, but sudden after increase in our price, again due to war and dollar strengthening, there are some other impacts as well. So our peers has increased our prices more than couple of times, maybe 3 times, but we have just raised our prices in 2 times.
there are few verticals where we have not fully transferred that prices being our new verticals. So we feel that in upcoming time from H2, we feel that the impact of our price revision and margin improvement will start showing. And for the whole year, we feel that EBITDA margin somewhere around 6.5%, we are comfortable to deliver this financial year. Okay. All right. So the second question is from Swati Madnani, and her question is, can you share the vertical-wise revenue bifurcation and how much the new verticals have contributed to this quarter? Right. The cold room contributed around 43%, industrial refrigeration around 3%, traditional commercial refrigeration 7%, transport refrigeration similar to 7%, ammonia and project combinedly around 5%, continuous panel around 17%, and commercial freezers around 19%. Okay, sir. So another question from Kanishka Gupta is, so he's asking what is our key rationale behind reducing EBITDA margins guidance instead of again expecting a price hike to protect EBITDA margins? The main impact was due to war. अभी वॉर की वजह से हर कंपनी में हमारे पीयर्स में भी मार्जिन्स के ऊपर इम्पैक्ट है. हमने भी हाइक किए हुए थे, लेकिन नए वर्टिकल जो हमने शुरू किए हुए थे, डीलर नेटवर्क एक्सपेंशन, उसमें हमारे नए डीलर्स को भी थोड़ा एक ही साल में बैक टू बैक प्राइस हाइक, हम थोड़ा वैसा भी सोच रहे थे कि वॉर का इम्पैक्ट है वो इतना लंबा नहीं चलेगा, थोड़ा सा हमने उसके वेटिंग पीरियड भी रखा. बट नाउ वी फील दैट कि ये वॉर वाली सिचुएशन कंटिन्यू रहेगी, तो अभी जो हमारे पीयर्स ने भी प्राइस हाइक किया हुआ है, तो वी आर ऑल्सो इन प्रोसेस. और H2 में हम जैसे ही प्राइस हाइक करेंगे तो मार्जिन है जो इम्प्रूव हो जाएगा. फर्दर ये डॉलर की वजह से भी हमारा जो इनडायरेक्ट इंपोर्ट होता है अराउंड 22-25% के आसपास हमारा जो टोटल परचेज कंपोजिशन है, दैट इज कंसिस्ट ऑफ इंपोर्ट, इनडायरेक्ट मटीरियल, इनडायरेक्ट इंपोर्ट एज वेल. तो उनका जो इम्पैक्ट है वो भी इस बार हाई रहा हुआ है. समवेयर अराउंड 50 लाख के आसपास का फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन लॉस भी हमने इस बार बुक किया हुआ है. तो मार्जिन हम एक बार पास ऑन करेंगे क्योंकि हमारे पास एम्पल ऑर्डर बुक है. एज ऑफ नाउ हमारे पास 222 करोड़ की पेंडिंग ऑर्डर बुक है. तो वी हैव एम्पल ऑफ ऑर्डर्स, हमारी फनल भी काफी स्ट्रांग है. तो हमें नहीं लगता कि हमारा टॉप लाइन ग्रो होगा और एक बार मार्जिन पास ऑन हो जाएगा. तो आई डोंट फील कि हम मार्जिन डिलीवर नहीं कर पाएंगे. बट होल ईयर में क्योंकि हमने फ्यूचर रेडी कैपेबिलिटी बिल्टअप की हुई है, तो ये वाले फाइनेंशियल ईयर में क्योंकि ये वाला क्वार्टर और मे बी अपकमिंग क्वार्टर, उन दोनों के जो परफॉर्मेंस है उसको सेट ऑफ करने के बाद वी आर सेइंग वी विल गेन समवेयर अराउंड 6-6.5% EBITDA. तो ये 2 साल को एवरेज आउट करने के बाद हम फुल साल में 6-6.5% का EBITDA ले आएंगे. करेक्ट. ठीक है. The next question is from Kaustav Yole from Blue Bridge Capital. So what he's saying that I have 3 questions. One is on margin. You implemented 10-11% price increases, yet Q1 margins declined. How much of the raw material inflation has been passed through, and what is the current pricing lag? That is one. On Galilei JV, IceMake is investing 35.3 crore for its 40% stake. What revenue, EBITDA and ROC are you targeting from the JV over the next 3 years? And third question is on order book. What is the current order book and Q1 order book inflow versus the earlier rupees 230 to 237 crore order book in the last quarter, Q4? And rupees 50 to 60 crore monthly run rate. So these are the 3 questions from Kaustav. एक्चुअली जो प्राइस हाइक की हमने बात की, हमने 11% के आसपास में सिलेक्टिव में प्राइस बढ़ाई है, लेकिन ओवरऑल जो इम्पैक्ट था फ्रॉम इंडस्ट्री वाज समवेयर अराउंड 15 to 18%. स्टिल वी लैक समवेयर अराउंड 6-6.5% के आसपास का जो प्राइस हाइक है वो हमने पास ऑन नहीं किया हुआ है.
मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट ओवरऑल हमारे प्रोडक्ट्स मिक्स की, तो वो मार्जिन हमने अभी भी पास ऑन नहीं किया। जो दूसरा क्वेश्चन था रिगार्डिंग दैट इन्वेस्टमेंट इन गैलीली, तो गैलीली हाँ, गैलीली में हम लोग 40% हमारा स्टैक है, उसके अगेंस्ट हम लोग 38-40 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है। एक्चुअली बिजनेस प्लान है, प्रोडक्शन ही 18 महीने के बाद शुरू होंगे, मार्जिन आते में एक साल और लगेगा, तो 2.5-3 साल के बाद है। एक्चुअल हम लोग उनके साथ में बैठ के थोड़ा और एग्जैक्ट प्रोजेक्शन करके हम अभी थोड़ा मुश्किल है एग्जैक्ट फिगर बोलना, लेकिन प्रॉफिटेबल बिजनेस है इंडिया में। ये प्रोडक्ट का काफी वैक्यूम भी है, इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी इतना ज्यादा नहीं है जो मार्केट की डिमांड के सामने, तो हमें कॉन्फिडेंस है कि हमारे एग्जिस्टिंग वर्टिकल को ये कॉम्प्लीमेंट करेगा, दोनों को वैसा वर्षा है, दोनों को सपोर्ट है। तो हमारे पार्टनर के लिए कई एक्सपीरियंस है इस प्रोडक्ट होलिका सेगमेंट का, तो उसको करके ही हम लोग एग्जैक्ट फिगर आपको बता सकते हैं। आवाज नहीं है तो हाँ। थर्ड क्वेश्चन कौन सा था आर्यन जी? रही है सर, कर पाएंगे? आवाज आ रही है। व्हाट वाज द थर्ड क्वेश्चन आर्यन जी? तीसरा क्वेश्चन था सर ऑन दी दिस थिंग पेंडिंग ऑर्डर बुक, आई गेस। order book. Yes, what is the current order book and Q1 order inflow versus the earlier 37 crore order book and rupees 50 to 60 crore monthly run rate जो आपने शायद लास्ट टाइम बोला था, उसके हिसाब से पूछा। अभी हमारी टोटल पेंडिंग ऑर्डर बुक 222 करोड़ की है, रूम में 39 करोड़ है, ट्रेडिशनल कॉमर्शियल में 29 CR है, इंडस्ट्रियल रेफ्रिजरेशन में 5 CR है, ट्रांसपोर्ट रेफ्रिजरेशन में 4 CR है, अमोनिया में 87 करोड़ है, प्रोजेक्ट 45 करोड़ है, कमर्शियल फ्रीजर में भी है, हमारे डीलर का एस्टिमेट होता है, बट अभी एज ऑफ नाउ हमारे पास 2-3 करोड़ के आसपास के पेंडिंग ऑर्डर्स हैं। कंटिन्यूअस पैनल में 11 करोड़ की पेंडिंग ऑर्डर वो है, टोटल मिला के 222 करोड़ है। ओके, ठीक है सर, 222 करोड़ की टॉप लाइन अभी है। और एक और क्वेश्चन का ये है कि गिवन यू हैव टेकन फ्यूअर प्राइस हाइक्स देन पियर्स, हैव यू सीन एनी मीनिंगफुल मार्केट शेयर गेन्स? आपको कुछ मार्केट शेयर बढ़ा है उसमें जब आपने एक कुछ फेयर प्राइस हाइक किए हैं? ऑल्सो व्हाट इज योर एक्सपेक्टेशन फॉर द रॉ मटेरियल साइकिल ओवर द नेक्स्ट 2-3 क्वार्टर्स में रॉ मटेरियल की कॉस्ट कैसी रहेगी, ये पूछ रहे हैं, कॉस्ट ऑफ दी। आप अपने वहां से करिए ना, यहाँ से अनम्यूट है, यहाँ से एक मिनट। मुकेश जी आप देखें कॉल अनम्यूट नहीं हुआ यहाँ से, तो मैंने सर तो एक बार रिफ्रेश करने को बोल दीजिए ना। आप रिफ्रेश कर लीजिए एक बार मनीष जी, एक बार आपका सिस्टम एक बार से, शायद उसमें कुछ हुआ होगा। तब तक आप टाइप कर लीजिए क्वेश्चन, किसी और का होगा तो आई विल जस्ट टेक दैट वन। आप अब जो क्वेश्चन को ट्रांसलेट करें वो हिंदी में करके दो। अच्छा ठीक है। तो आपने जो है 2 प्राइस हाइक किए थे पिछले उसमें, जबकि आपके जो पीयर्स उन्होंने 3 बार किया था। सो डिड यू, क्या आपका मार्केट शेयर कितना बढ़ा एंड व्हाट इज द और आउटलुक आपकी क्या है रॉ मटेरियल प्राइसेस को लेकर के आगे के 2-3 क्वार्टर्स में, ये सवाल है उनका। So it is difficult to quantify the market share gains, but otherwise the demand was pretty strong for all categories that we address. But I can comfortably say that we have made good strides in the continuous panels as well as the chest freezer business. So
that these two businesses have grown significantly while we maintained the market share and even a bettered, of course, by a few basis points in the cold room and other segments that we operate in. Raw material prices, we expect that the situation of volatility will continue over the next quarter. I mean, this Q2 and some rub off on the Q3 as well. So we don't see any hope that the raw material will become stabilized or the volatility will come down. We don't expect any of that possibility right now because you all know better. You share my opinion that the global uncertainty continues as ever. Absolutely. So we are now halfway through Q2 with the winter season approaching. Could you give us some sense of the demand environment so far and the outlook for the upcoming winter season? How should we think about seasonality in H2? This is a question from Swati Madnani. Swati is a good question. I think we have few verticals, business verticals, which are season agnostic, especially cold rooms. The demand for the cold rooms is season agnostic, which will continue to grow because we operate across pharma, essentially food processing, seeds, and a couple of other segments which consume our cold room solutions. And our new business line, which is continuous panel, is also season agnostic. So you will have some seasonality effect on the business, but I would confidently say these 3-4 lines that we operate with is season agnostic itself. One business which is highly season centric is the chest freezer business, but that business, the demand for those products also will start picking up from the festive season. As the festive season begins, the impact of seasonality also slowly fades away because festive drives some demand for the chest freezers as well, as we have seen in the market in the last 2 to 3 years' time. Okay, so now the next question, one more question from Manish Kela, and that is on sponsored market. If you look at the sponsored market for Visi coolers, if not, why we are not targeting this segment? Is a sponsored market है Visi cooler का, why are we not targeting? इसे हम target क्यों नहीं कर रहे हैं? ये पूछ रहे हैं मनीष जी. Sponsored market. So RNG, first of all, to cater the sponsored market, you need to have a bigger capacity, and for that you need a good amount of capital. And currently, what we are trying to do is whatever we invested in the last 2 years, we are trying to optimize it to the full capacity. And if you talk about the margin scales, margin is lying in actually the retail market and not in the mainly sponsored market. So our first focus will be strongly dealer market and retail market, where we want to establish our brand on the dealer channel and not on the name of any Coke and Pepsi, right? So first thing is it needs heavy capital and so much capital, and second thing is we want to establish the retail market first, and then in a next case we will go for this sponsored market and mass scale. So even though this is a new product for ice mix, we want to establish our product in a retail market, get the good margins, and from this margin we want to expand into the next lines and this new market. Okay, sir. All right. The next question is from for चंद्रकांत पटेल सर के लिए क्वेश्चन है और ये कौस्तुभ जी का क्वेश्चन है. सर, आपने पहले यूटिलाइजेशन की बात करी थी कि 55 से 60% के आसपास में आपका न्यूअर फैसिलिटीज में होगा, है ना? वेयर डज यूटिलाइजेशन स्टैंड? अभी जो यूटिलाइजेशन है वो कहाँ पर है, एंड हाउ मच रेवेन्यू कैन द एग्जिस्टिंग कैपेसिटी सपोर्ट? कितना जो है उसमें रेवेन्यू आ सकता है जो आपकी एग्जिस्टिंग कैपेसिटी है? एग्जिस्टिंग कैपेसिटी यूटिलाइजेशन जो बढ़ा हुआ है वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये प्रोडक्ट सीजनल है. दोनों ही प्रोडक्ट ऐसा है, मास प्रोडक्शन है, सीजनल है. थर्ड और फोर्थ क्वार्टर में सबसे ज्यादा सेल होता है. तो
अब तक का एवरेज यूटिलाइजेशन बताना थोड़ा। ओके, हेलो। दोनों मिला के हम लोगों ने दोनों नए वर्टिकल मिला के 62 CR, मतलब ऑलमोस्ट आप ऐसा समझ सकते हैं कि 35-36% हमने लाइन का कंट्रीब्यूशन। कैपेसिटी यूटिलाइजेशन में फर्स्ट क्वार्टर में 60% है, सेकंड क्वार्टर थोड़ा सा वो प्रोडक्ट के लिए एवरेज। Hello, can I ask a question? yeah, please go ahead. Yeah, no problem. Yeah, the issue earlier was that I refreshed the page, then now I am able to unmute myself. You are Kanishk, right? Yes, sir. Yeah, go ahead, boss. Go ahead. Thank you. Yes, sir. Coming back to the question that Manish ji asked on the sponsored market, sir commented that our priority first is the dealer market, and secondly we need capital to expand our capacities to cater to the sponsored market. So now investments coming from Galilei of approximately 180 crores. So how do we plan to exactly utilize that? If you can throw some light on it. हमारे जो टोटल ऑब्जेक्ट है उसमें 58 करोड़ जो अमाउंट है वो मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स के लिए है। उसमें वन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स हमारा आइसमेक की कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए भी है। वी विल हैव फंड्स अवेलेबल मोस्ट प्रोबेबली इन द नेक्स्ट मंथ। सो फेज वाइज मैनर में उसका जो इंस्टॉल कैपेसिटी है वो हम बढ़ा पाएंगे। मोस्ट प्रोबेबली कमिंग 5 to 6 months इट विल टेक टाइम टू डिप्लॉय और कैपेसिटी बिल्डिंग। तो स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट में मे बी ये फाइनेंशियल ईयर एंड सीजन टाइम में या फिर मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में उसका बेनिफिट शुरू होगा कैपेसिटी। Apart from the 58 crores, what would be the rest of the capital used for? Actually, there are multiple objects. हमने कंटिन्यूस पैनल में भी स्पेसिफिक अपग्रेडेशन प्लान किया हुआ है, पीएफ में किया हुआ है, ट्रेडिशनल वर्टिकल्स में भी मल्टीपल अपग्रेडेशन है। तो देयर आर वेरियस ऑब्जेक्ट्स इन दिस 58 crores. Further, there are some acquisition related opportunities as well, which is under discussion phase, and we are still exploring. So we cannot comment exactly the status, but once the things get finalized, we will update you in a due course. And sir, as phase 1 is largely completed, अब तो हम इसको phase 2 capex consider कर सकते हैं अभी जो फ्यूचर में आप take place होगा? Yes, ये सेकंड फेज का ही कैपेक्स है जो गैलीली के थ्रू फंड होगा। और सर लास्ट क्वेश्चन रहेगा कि हमने ओपनिंग कमेंट्री में रॉ मटेरियल प्राइसेस की वजह से मार्जिन पे हिट लिया, पर हमारा रेवेन्यू भी सिग्निफिकेंटली बढ़ा है। तो सर हम ऑपरेटिंग लेवरेज को प्ले आउट होता देख सकते, क्योंकि रेवेन्यू बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग ग्रो हो रहा है अभी हमारा, पर वो बॉटम लाइन में अभी कन्वर्ट नहीं हो पा रहा है। कि ये अभी वॉर सिचुएशन है, इसलिए थोड़ा सा हमारे लिए भी ये प्रिडिक्ट करना डिफिकल्ट था, इसलिए ये थोड़े मार्जिन वाला इम्पैक्ट आपको ये फर्स्ट हाफ में दिखेगा। बट सेकंड हाफ में एज वी सेड अर्लियर के हम मार्जिन पास ऑन कर रहे हैं। फर्दर जो ऑपरेटिंग एक्सपेंस की आप जो जिक्र कर रहे हैं, तो कंपनी सिर्फ 1000 करोड़ नहीं, मतलब बियॉन्ड 1000 करोड़ भी जाना है। जो भी कंपनी का मैनेजमेंट है वो प्रोफेशनली इंडिपेंडेंटली गवर्न होगा, रन कर सके, उसके लिए भी कॉस्ट तो हमें आज ही बुक्स पे हिट करनी है। तो एज वी सेड 1000 करोड़ के बियॉन्ड भी कंपनी ग्रो करेगा तो ऑफकोर्स टॉप लाइन बढ़ेगा, हम मार्जिन को भी कंसिडरेशन में रखेंगे, लेकिन जो ऑपरेटिंग एक्सपेंस है वो सर्टेन पॉइंट्स के बियॉन्ड इक्विवेलेंट अमाउंट के थ्रू इंक्रीज नहीं होगा। और व्हाट वी सी दैट अभी ये जो बिजनेस और जो अपॉर्चुनिटी हम देख रहे हैं, तो ऑपरेटिंग कैपेबिलिटी बिल्डिंग को फोकस करना ही उतना ही जरूरी है, क्योंकि आगे वाला जो ग्रोथ होगा वो रैपिड ग्रोथ होगा। तो उस टाइम पे हम जब इन्वेस्ट करने जाएंगे तो इट विल बी वेरी लेट, और ये वाला राइट टाइम है। थोड़ी सी कॉस्ट हमारे बुक्स के ऊपर आएगी, लेकिन
बियॉन्ड 2, 3, 4 to 5 years अगर हम देखेंगे तो उसका जो बेनिफिट है वो काफी वास्ट लेवल पे आएगा। अभी जो बड़ी बड़ी कंपनीज में हम देख रहे हैं तो उस लाइन का इंडिपेंडेंट ऑपरेशन हमें अगर लाना है तो कॉस्ट तो आज ही बिल्टअप करनी पड़ेगी। Okay, sir. Thank you. थैंक यू। Now we have Mr. Tej Patel. Sir, you can go ahead with your question. Can you unmute yourself? Tej, are you there? Can you unmute? In the meanwhile, we'll take one more call, one more question from Mr. Mosam Shah. And his question is, what is the peak revenue potential from the existing capacity? Existing capacity से कितनी potential है peak revenue की? ये question है मौसम साहब। आफ्टर फर्स्ट फेज ऑफ कैपेक्स हम 950 करोड़ प्लस की टॉप लाइन कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। इट्स अवर इंस्टॉल कैपेसिटी। Okay. Kaustuv, you are not able to unmute yourself. You have another question for Mr. Chandrakant Patel ji. With the Galileo JV जो अभी आपने किया है, how has your strategy changed to compete with the larger player? मतलब आपकी जो comparative strategy वो कैसे change हुई है जो आपके बड़े वाले peer groups players जो हैं, having all price cost और strong market share कैसे होगा आने वाले समय में? ये क्वेश्चन है कौस्तुभ जी का। आपका क्वेश्चन गैलेली प्रोडक्ट को लेके है ना, जेवी में? ये गैलेली, यस जेवी के लिए। तो ये प्रोडक्ट में ऐसा बोल सकते हैं कि इंडिया में कोई अच्छे मैन्युफैक्चरिंग प्लेयर में तो एक ही प्लेयर है। सेकंड प्लेयर के लिए काफी मार्केट ओपन है, काफी गैप है, क्योंकि अनऑर्गेनाइज और चाइना तो इंपोर्ट के काम इंडियन मार्केट की नीड को पूरी की जाती है। तो एज ए जापानीज पार्टनर के साथ हम मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। इंडिया में आईस्मैक का अपना एक सर्विस नेटवर्क, ब्रांड रेपुटेशन और सर्विस डीलर नेटवर्क की वजह से हम लोग सेकंड प्लेयर में हम सेकंड नंबर पे काम करेंगे। प्राइस तो प्रोडक्ट्स में प्राइस मैटर नहीं करता है, क्योंकि क्वालिटी के लिए एक होरिका सेगमेंट एक अलग स्केल पे चलता है। जो हम लोग CF है, विजिकुलर है, वो थोड़ा सा कमोडिटी जैसा प्रोडक्ट हो गया। और हमारे अपने डीलर नेटवर्क है, ब्रांड रेपुटेशन, जापानी टेक्नोलॉजी, तो हमें लगता है कि इजीली हम लोग अच्छे मतलब ट्रेड प्रैक्टिस जो अभी चल रहा है वैसे हम लोग कर पाएंगे। ओके, और कोई क्वेश्चन है किसी का? एनी मोर क्वेश्चंस प्लीज, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ और यू कैन आस्क इट ऑन द Q&A panel. Swati से क्वेश्चन है, सर, following the previous question, can you quantify what is the market opportunity for the product with Galilei? मार्केट अपॉर्चुनिटी क्या होगी आपके प्रोडक्ट की Galilei के साथ में जो आपका जीवी हुआ है? ये क्वेश्चन स्वाति जी का है। अनऑर्गेनाइज प्लेयर भी है, मार्केट साइज बताना मुश्किल है, लेकिन मुझे लगता है कि 1500 करोड़ का मार्केट हो सकता है, क्योंकि जो हमारे पीएम के बिजनेस को जानते उस हिसाब से 1200 to 1500 CR मार्केट साइज होगा। ओके, ठीक है। कोई और क्वेश्चन है किसी और का? एनी अदर क्वेश्चन प्लीज, यू कैन टाइप इट हियर। आई थिंक देयर इज सम इश्यू विद द ऑडियो टुडे। Yeah, am I audible? Hello. Yeah, you are. Please go ahead. Tej, Yeah, right? Yes. Okay, Thank you so much Alright. for the opportunity. Sir, ये जो फर्स्ट क्वार्टर में, if you could help me understand कि I assume
ऑल्दो अपन ने 11% प्राइस इंक्रीज लिया है, देर आर ऑर्डर्स जो शायद पुराने भाव पे लिए होंगे, तो आई गेस अपन की Q4 में कुछ 200 करोड़ के करीब की ऑर्डर बुक थी। सो थोड़ा अगर अंदाजा दे सके कि ये क्वार्टर कितना रेवेन्यू ऐसा बुक हुआ होगा दैट वुड बी लेट्स से एट एन ओल्डर प्राइस, जहां पे ये 11% का इंक्रीज फुली प्राइस ही नहीं हुआ होगा। एक्चुअली हम ये गाइडेंस दे रहे हैं कि कुछ ये वाले क्वार्टर में हम थोड़ा पास ऑन करने का ट्राई करेंगे, लेकिन मैक्सिमम विजिबिलिटी H2 से आएगी। वी डू नॉट एक्सपेक्ट के H1 में हम बहुत ज्यादा इम्पैक्ट कर पाएंगे। नहीं सर, मेरा क्वेश्चन थोड़ा वो था कि मैं बोल रहा हूँ कि अपन ने 11% जो इंक्रीमेंट लिया था ये क्वार्टर, राइट, बट अपन के पास एक्सिस्टिंग ऑर्डर बुक पड़ी थी 200 करोड़ की। मैं बोल रहा हूँ कि जो 200 करोड़ की ऑर्डर बुक होगी दैट वुड प्रोबब्ली एट एन ओल्डर प्राइस, राइट, बिकॉज नेगोशिएशन ऑलरेडी हो चुके होंगे। द क्वेश्चन आई वाज ट्राइंग टू अंडरस्टैंड इज कि कितना परसेंटेज ऑफ ऑर्डर बुक जो 200 करोड़ का था वो ये क्वार्टर एग्जीक्यूट हुआ होगा जो पुराने भाव पे डील हुई होगी, राइट, जो 11% जिसमें इंक्रीमेंट का इंक्लूजन नहीं आया होगा। आप हमारी पेंडिंग ऑर्डर बुक में प्रोजेक्ट्स वाले बिजनेस आप निकाल देंगे, तो जैसे कोल्ड रूम, कॉमर्शियल और कंटिन्यूअस पैनल की जो अभी एग्जिस्टिंग पेंडिंग ऑर्डर है दैट वुड बी समवेयर अराउंड 70-75 CR के आसपास, राइट। तो वो वाला आप ऐसा कंसिडर कर सकते हैं कि भी ये जो पेंडिंग ऑर्डर बुक है उसी के अंदर शायद ओल्ड प्राइस है जो हमने ऑलरेडी बुक किया हुआ हो, उसमें इम्पैक्ट हो सकता है। अच्छा, आप बोलो कि प्रोजेक्ट बिजनेस में पुराना वाला भाव होगा अभी भी? प्रोजेक्ट वर्क्स डिफरेंटली, तो प्रोजेक्ट वाले बिजनेस को हम रेगुलर रूटीन जो बिजनेस प्रोजेक्ट को आप पुराना बोल सकते हैं, क्योंकि टेंडर है ना, तो ये टेंडर जब हमने वो बीड किया रहता है तो उनके 2-2.5 महीने बाद तो आपके हाथ में ऑर्डर आते हैं, तो टेंडर का जो बिजनेस है। लेकिन एक्चुअली प्रोजेक्ट और टेंडर बिजनेस का मार्जिन भी ठीक है, इसलिए वहाँ हमारे उसमें कोई ज्यादा वैल्यू एडिशन नहीं होते, तो उसके प्राइस के हाइक से ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जो हमारी अदर प्रोडक्ट है कोल्ड रूम और CPCF में, वहाँ प्राइस हाइक में ज्यादा इमीडिएट फर्क आ जाता है। अंडरस्टूड। बट सर मेरा क्वेश्चन ऑफ कोर्स कंफ्यूजन हो रहा है। हाँ, मेरा ये था कि सर जो Q4 में अपना ऑर्डर बुक था, जो प्रीवियस ऑर्डर बुक था, उसमें पुराने भाव की ऑर्डर बुक अच्छी खासी होगी, उसमें से थोड़ी अच्छी खासी ऑर्डर बुक ये क्वार्टर एग्जीक्यूट हुई होगी जो नया प्राइस इसमें इंक्लूड नहीं हुआ होगा। और अभी जो अपनी 200 करोड़ की एग्जिस्टिंग ऑर्डर बुक है वो सारे अभी दैट वुड बी ऑल एट न्यू प्राइसेस, राइट, बिकॉज अपन ने अप्रैल से ही भाव बढ़ा दिए थे। जी, तो उसमें आप 50% पकड़, 100 करोड़ का जो ऑर्डर है वो पुराने प्राइस पे होंगे जो प्रोजेक्ट नेचर के। ओके, तो उधर इम्पैक्ट आ सकता है अभी भी? हाँ, वो इम्पैक्ट आ सकता है। तो सर पफ पैनल में पास ऑन हो गए भाव, जो भी लेट से पफ के जो प्राइसेस बढ़े थे वो पास ऑन हो चुके हैं? पफ पैनल के प्राइस पास ऑन हो गए, चेस्ट फ्रीजर हो गया, कोल्ड रूम में हो गया। ओके, दो बार तो हो गया, थर्ड टाइम के लिए भी प्रिपरेशन कर रहे कि एक साथ में आप कंप्लीट एक ही साथ में तो आप कंप्लीटली पास ऑन नहीं कर सकते। अंकित सर, इज इट पॉसिबल टू टेल कि ये जो Q1 में पफ पैनल में क्या ग्रॉस मार्जिन अपन ने किए होंगे? नहीं, वो थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा इस स्टेज पे, क्योंकि कुछ कॉमन ऑपरेशंस भी है। ओके, नो प्रॉब्लम, अंडरस्टूड। एंड सर थोड़ा वो जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड मैनेजमेंट का पर्सपेक्टिव कि लेट्स से अभी जो सिचुएशन है, राइट, जहाँ पे लेट्स से प्राइसेस ऑफ इंक्रीज, लेट्स से सर बोले थे 16-18%, बट लेट्स से ऑन एन इंक्रीमेंटली ऑल्सो अपन 10-11% ही पास कर पाए, शायद थर्ड रेज नहीं भी कर पाए बिकॉज अपन वी जस्ट स्टार्टेड दिस बिजनेस नया वाला, सो डीलर को इतना इम्पैक्ट भी नहीं कर सके। बट तो हो क्या रहा है कि एक बाजू सर अपना ग्रोथ काफी अच्छा हो रहा है, बट दूसरी बाजू कन्वर्जन नहीं हो रहा है, तो बट जो इंक्रीमेंटल ग्रोथ है ना सर, उसका कोई कैश फ्लो बन ही नहीं रहा। तो अपना हर बार अपना एवरी टाइम नए सेल के लिए अपने को कैपिटल चाहिए बिकॉज एग्जिस्टिंग सेल से कोई कैश फ्लो ही नहीं आ रहा। तो ऑल्दो अपने पास इतना डिमांड है, अपन हैज अ कॉन्शियस डिसीजन ले रहे कि कोई ऑर्डर अपन लेट्स से बिकॉज ऑफ करंट एनवायरमेंट सिनेरियो अपन एक बार जाने दे रहे
टू जस्ट मैनेज कि ये फेज निकल जाए, बिकॉज एक ही अपना इनेबिलिटी है कि और पास ऑन कर पाएंगे और अभी भी प्राइसेस एलिवेटेड है। ये वाला जो फेज है थोड़ा हमारे लिए ट्रिकी भी था। मतलब हमने ये एनवर्साइज नहीं किया था कि ये वॉर का इम्पैक्ट कितना लंबा चलेगा, कब बीच में थोड़ा सा स्टेबिलिटी आया था, तो हमने फिर से प्राइस हाइक वाला जो डिसीजन था वो थोड़ा होल्ड पे रखा कि भाई अभी थोड़े प्राइजेस हमारे कंट्रोल हो जाएंगे, बट फिर से वॉर स्टार्ट हो गया। तो नाउ अब प्राइस पास ऑन का हमने डिसीजन अभी बना लिया हुआ है। तो ये वाली फेज के अंदर इंडस्ट्री भी काफी लॉन्ग टाइम के लिए बिना प्राइस हाइक किए ऑपरेट नहीं कर पाएगी, और नए वाले जो वर्टिकल है उसमें बिजनेस पोजीशनिंग के लिए जो डीलर नेटवर्क हमने एस्टैब्लिश किया हुआ है उनका कॉन्फिडेंस भी आइसमेक में बना रहे, उसके लिए मतलब ऑर्डर जाने दे वैसा सिनारियो तो अभी हम नहीं सोच रहे हैं, लेकिन जो ऑर्डर्स हम ले गोइंग फॉरवर्ड प्राइस हाइक का इम्पैक्ट उनको पास ऑन करे वो हमारे फोकस में रहेगा। क्योंकि प्रूडेंटली बिजनेस जाने देना तो पोटेंशियली ऐसा हो जाएगा कि बिजनेस के साथ हमारा कनेक्ट लूज हो जाएगा। तो हमें ऐसा नहीं लग रहा है कि भाई प्राइस पास ऑन करके भी मतलब गोइंग फॉरवर्ड वाले बिजनेस से हम मार्जिन नहीं कमा पाएंगे। कुछ फेज बिजनेस में ऐसे आते हैं जब क्वार्टर में हम जो एक्सपेक्ट करते हैं वैसे हम आउटकम ना ले पाए, लेकिन दैट डजंट मीन कि हम वो पोटेंशियल बिजनेस को लूज करें, क्योंकि अभी इतनी अच्छी पेंडिंग ऑर्डर बुक है, हमारी फनल है, हम प्राइस हाइक करेंगे तो उसका भी बेनिफिट पास ऑन होने वाला है, हमारी सर्विसेज भी काफी अच्छी है, तो कस्टमर का वो कंफर्ट हमारे ऊपर बना हुआ है और डीलर को भी हमारे ऊपर ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस है। तो ये इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। H2 के अंदर हमें लगता है कि हम प्राइस पास ऑन वाला इम्पैक्ट आपको शो कर पाएंगे, और फुल ईयर में हम जो 6.5 वाला जो EBITDA मार्जिन बोल रहे हैं वो एक बार फुल ईयर के फाइनेंशियल पब्लिश होंगे, देन इन्वेस्टर विल ऑल्सो गेन कॉन्फिडेंस। अंडरस्टूड, ग्रेट। एंड सर अंकित सर, क्वेश्चन आपके लिए कि फॉर एग्जांपल जैसे मैं Q1 का अदर एक्सपेंस देख रहा हूँ, राइट, दैट इज 30 करोड़ ऑलमोस्ट, और सेम वाई एंड वाई देखो अगर Q1 FY26 जब अपना नया बिजनेस स्टार्ट नहीं हुआ था, राइट, इट वाज कैपिटलाइज भी नहीं हुआ था, तो ऑलमोस्ट 22 करोड़ के जितना है, मतलब 18 से 19 करोड़ रहता था अगर मैं नॉर्मल पुराना बिजनेस मानूं। तो इंक्रीमेंटल ये जो 8-9 करोड़ रुपए आए, राइट, ये क्वार्टर, इज इट राइट टू अज्यूम कि इसमें काफी हद तक फिक्स नेचर है? बिकॉज जो मेरी समझ है अपनी लाइन्स काफी हद तक ऑटोमेटेड है, राइट, तो अगर मैं 30 पे चलाऊं लाइन या 60 पे चलाऊं मेरा सेम ही इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट लगने वाला है, और थोड़ा बहुत ऑफकोर्स वेरिएबल रहेगा इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉय और लेट्स से थोड़ा बहुत कंज्यूमेबल्स में। तो इज इट राइट टू अज्यूम कि गोइंग फॉरवर्ड जो अपन का अभी 40-50% है यूटिलाइजेशन नए बिजनेस में, जब वो 80 भी जाएगा तो ये 9-10 करोड़ का नंबर शायद 12-13 से मतलब इंक्रीमेंटली बहुत नहीं बढ़ने वाला, वो शायद 13-14 तक जा सकता है मैक्स, बट वो समवेयर अराउंड फिक्स कॉस्ट ही है इसमें मेजर। हमने ये वाली जो एक्सपेंडिचर है उसमें हम फिक्स नेचर के ज्यादा बोल सकते हैं, वेरिएबल नेचर के भी एक्सपेंडिचर रहेंगे। कुछ कंपनी ने वैसे डिसीजन लिया हुआ है कि भाई जो नए प्रोडक्ट है उसको एस्टैब्लिशमेंट करेंगे, ज्यादा ब्रांडिंग करेंगे, फिर डीलर नेटवर्किंग में और ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे, कुछ प्रमोशनल एक्टिविटीज है उसको भी कॉस्ट हमने स्टॉप नहीं किए हुए हैं। तो मतलब एक्सपेंडिचर को ज्यादा कॉम्प्रेस करने से ज्यादा हम मार्जिन पास ऑन करके बिजनेस बढ़ा के इसके सामने रिकवरी करे और प्रॉफिट शो करे, ये हमारा फर्स्ट फोकस है। अदरवाइज कुछ एक्टिविटीज ऐसी है जिसमें हम एक्सपेंस को कंट्रोल कर सकते हैं, बट द थिंग इज हमें फ्यूचर के लिए भी देखना है। एक आध क्वार्टर या H1 हमारा इम्पैक्टफुल हो जाता है तो हमें फ्यूचर की विजिबिलिटी कम नहीं लगती है, और पास्ट में भी हमने जो प्रॉफिट डिलीवर किया हुआ है उससे हमें बिजनेस में कॉन्फिडेंस है कि भी ये वाला जो एक्सपेंडिचर है वो फ्यूचर में तो पे आउट करने वाला ही है। तो वी आर जस्ट नॉट थिंकिंग अबाउट करंट ईयर, फ्यूचर में भी हमें ये बिजनेस को एक अलग स्केल पे ले जाना है, हो सकता है फ्यूचर में हमें और एक्सपांशन करना पड़े, तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ये हमारे लिए इन्वेस्टमेंट साबित होगा। आई अंडरस्टूड सर, मेरा पर्पस ये क्वेश्चन का थोड़ा वही जानने का था कि फिक्स नेचर के कॉस्ट कितने, ताकि आई जस्ट वांटेड टू अंडरस्टैंड कि आगे जाके इंक्रीमेंटल रेवेन्यू पे खर्चा सेम रहेगा, इससे मेरा पर्पस था। तो ऑल्दो सर आई अंडरस्टूड आप जो पॉइंट बोल रहे हो कि इससे मार्केटिंग वाला खर्चा भी होगा, बट अगर आपको थोड़ा अगर क्वान्टिफाई करना है टू फॉर अ ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग के जो इंक्रीमेंटल 10-11 करोड़ लगे, राइट, बिकॉज ऑफ द न्यू बिजनेस कमिंग इन,
उसमें से कितना फिक्स नेचर का होगा, मतलब 6-7 करोड़ फिक्स्ड हो गया आपके हिसाब से इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज की भाई इतना तो फिक्स्ड ही रहेगा रिस्पेक्टिव ऑफ यूटिलाइजेशन? एज ऑफ नाउ ये वाली इंफॉर्मेशन हैंडी नहीं है, आप अलग से आप हमें मेल कर देना, हम आपको उसके ऊपर रिवर्ट कर देंगे. श्योर. एंड ये वन मोर क्वेश्चन ऑन द ये जो अपना अभी द जेवी विच वी आर प्लानिंग विद गलेली, ऑफ कोर्स चंद्रकांत सर ने बोला इट विल टेक टाइम, बट द अमाउंट जो मैंने देखा इट इज क्वाइट सिग्निफिकेंट, मतलब दोनों मिलके ऑलमोस्ट अच्छे 90 करोड़ ये बिजनेस में डालने वाले, इज क्वाइट सिग्निफिकेंट जो अपने को स्टार्ट मिलने वाला है. जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि ये केपेक्स जो अपन जो पैसे लग रहे हैं इसमें से केपेक्स कब तक कमिट होने वाला है, आई मीन और कब अपन व्हेन कैन वी स्टार्ट सीइंग रेवेन्यू फ्रॉम दिस जेवी, और कब तक ये फंड्स डिप्लॉयमेंट का प्लानिंग है? एक्चुअली प्रोडक्शन हम लोग फरवरी 28 टारगेट किया हुआ है. 18 महीने का हमारे पार्टनर ने एक रोड मैप बना के दिया हुआ है, क्योंकि इंडियन कंडीशन, इंडियन पावर और एनवायरमेंटल रूल्स को देख के एक प्रोडक्ट डिजाइन भी करना है. कंप्लीटली प्रोडक्ट डिजाइन और टेक्नोलॉजी उनकी ओर से आना है, तो उनको भी इंडियन प्रोडक्ट में क्रिएट आप पकड़ सकते हैं, प्रोडक्ट लॉन्च कर देंगे. ओके, इंटरेस्टिंग. और सर ये प्रोडक्ट अपन खाली इंडिया मार्केट में टारगेट कर रहे हैं या आउटसाइड इंडिया भी सोच रहे हैं? फर्स्ट फेज में तो इंडियन मार्केट है. और सर ये परफेक्ट, गॉट इट. और सर ये थोड़ा चंद्रकांत सर आपसे भी थोड़ा एक पर्सपेक्टिव ब्रॉडर जानना था कि जैसे अपन जेवी में तो अलग से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, राइट? आई एम जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि वो लोग ने जैसे कैपिटल कंपनी में भी डाला है, राइट? वो माइंडसेट क्या था उनका कि कि कंपनी में भी कैपिटल डालना है वर्सेस लेट्स से ना कि खाली एक जेवी बना के डालना है, तो उस पर्सपेक्टिव से स्ट्रेटेजिकली कैसे अपने को हेल्प करेगा, थोड़ा ब्रॉडर व्यू जानना था आपके कन्वर्सेशन से. एक्चुअली वो लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप को लेके आइसमेक में भी इन्वेस्ट किया हुआ है. तो उनकी जेवी को सिक्योर करने के लिए उनका प्रिंसिपल कंपनी आइसमेक में बैठने से उसको लगता है कि हम जेवी को अच्छे से सपोर्ट कर पाएंगे अजय आइसमेक. तो वैसे उन लोगों ने टोटल तो 20% स्टैक डिमांड किया था, तो हमने एसपीए में भी वो प्लान किया हुआ है कि तो वो तो कंट्रोल स्टैक तो हम लोगों ने मना किया था कि हम नहीं करेंगे. कंपनी के पास, आइसमैक के पास मल्टीपल प्रोडक्ट है, इसीलिए जेवी फॉर्म करके वो प्रोडक्ट वहां पर किया. अंडरस्टूड. और सर जो प्रोडक्ट्स अपन सोच रहे हैं जो होरेका सेगमेंट में, वो अभी अपन तो नहीं बना रहे, राइट? एटलीस्ट वो कम्प्लीटली सेकेंड ही रहेगा. हम बनाते, लेकिन वो हमारा वो फोकस नहीं वो प्रोडक्ट में, क्योंकि जापानी टेक्नोलॉजी के साथ जो प्रोडक्ट बनते हैं उससे हम अभी जो बनाते हैं उसका कोई कंपैरिजन है नहीं, इसीलिए ज्यादा नंबर्स नहीं है. हम लोग ज्यादा बिजनेस लूज नहीं करेंगे हमारे एग्जिस्टिंग बिजनेस में. And sir, last question, I will join back in the quick queue. The acquisition, of course, the JV would let's say take 18 months. Acquisition, sir, कब तक वो कब तक fructify होगा या कब तक सोच रहे हैं? एक्विजिशन ओपन है. एक्विजिशन हमने ऑब्जेक्ट में एक्विजिशन और हमारे पास अपने भी प्रोडक्ट एक्सपांशन, यहाँ की जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी स्केल बढ़ाना, जियोग्राफिकल एक्सपांड होने के भी जरूरत है, क्योंकि प्रोडक्ट का लॉजिस्टिक कॉस्ट को लेके हम मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी 2-3 रीजन में होना चाहिए. तो 2-3 ऑब्जेक्ट के साथ हम लोग करते हैं. एक्विजिशन उसमें से एक है, तो वो बोल नहीं सकते कि एक्विजिशन कब होगा और होगा. नो प्रॉब्लम सर. गॉट इट. थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट. ओके, थैंक यू. ऑलराइट सर, तो अभी एक क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग जो है, एफडीए जो है फूड जो डिपार्टमेंट महाराष्ट्र का है, वहां से एक क्वेश्चन है. उसके एफडीए के कारण जो बाजार में बदलाव देखने को मिल रहे हैं, और जिस तरह से श्री तुकाराम मुंडे जी जो महाराष्ट्र के एफडीए के चीफ है, व्यवसायों को नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, और क्या इससे आइसमेक के जो हमारे प्रोडक्ट हैं उसकी मांग में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है? ये सवाल है धनेश का. See the rules under FSSAI
under DFM Maharashtra. It is more towards with the food quality part, to do with the ingredients mix, more to do with the standard operating process within the hotels, all of that. So, see, we provide infrastructure, cooling infrastructure, refrigeration infrastructure. I don't think that will have any impact, or either positive or negative, with that kind of a rule that is coming in. But probably it may help in some way or other to, comply with norms much better in terms of the temperature, hygiene, and standards. Correct. All right, sir. So now next question, we have 2-3 questions more. One is from Mosham Shah. Are we planning to reduce debt from 180 crore that came in the company? So question on the debt, 180 crore. Actually, 40 crore debt repayment object is there in our preferential object, and the other 39 crore is as a GCP. GCP is mostly towards the working capital need. So 40 crore is exactly where we are planning to pay the debt, which is earlier used for the capex purpose. Okay. थैंक यू अंकित जी. दूसरा सवाल जो है अंकुर गुलाटी जी का है, एंड द क्वेश्चन इज व्हाई इज डेप्रिसिएशन डाउन इन जून 26 to 205 from 449 in March 2026. सो ये जो डेप्रिसिएशन के ऊपर सवाल है. कंपनी अभी अपकमिंग टाइम में काफी हैवी कैपेक्स कर रही है, तो जो कैपेक्स हम करेंगे उसका बेनिफिट गोइंग फॉरवर्ड ग्रेजुअली बिजनेस को मिलना शुरू होगा. Whereas जो हमारी प्रीवियस WDV पॉलिसी है उसमें मैक्सिमम डेप्रिसिएशन इनिशियली में आता है. तो वी फील दैट द बेनिफिट विच कंपनी इज गोइंग टू गेट फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट doesn't sync with the existing policy we have adopted. So suitably to match the benefit with the cost on our books, we have decided to change our accounting policy, which is thoroughly discussed in our board, and then we have adopted the same. So just to match the benefit of our investment in capex vis-a-vis the benefit of our top line revenue which we are going to gain in the future. It will in future get changed. और बड़ी जो भी इंडस्ट्री है जैसे हमारे पीयर्स है, ब्लू स्टार है, वो सभी भी SLM पॉलिसी ही फॉलो कर रहे हैं. तो वी थॉट बेटर टू प्रिपेयर अवर फाइनेंशियल्स इन सिंक विथ अवर इन्वेस्टमेंट, पॉलिसी चेंज. करेक्ट. All right, so I think we've already crossed the 5-6. So shall we close now? I mean, I just wanted to. There are no further questions, I suppose. All right. So now I'll invite Mr. Chandrakant P. Patel, our Chairman and Managing Director, for his closing remarks. Over to you, sir. Good evening. Q1 FY27 में strong revenue moment देखने को मिला है, जबकि प्रॉफिटेबिलिटी में इम्प्रूवमेंट हमारा इमीडिएट प्रायोरिटी एरिया बना हुआ है. कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, एफिशिएंसी, प्रोडक्ट मिक्स और कॉस्ट डिसिप्लिन को बेहतर करने पर हम फोकस कर रहे हैं, ताकि फ्यूचर ग्रोथ के लिए किए गए इन्वेस्टमेंट बेहतर ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस में ट्रांसलेट हो सके. प्रस्तावित गैलेली ट्रांजैक्शन कंपनी के लिए एक महत्वपूर्ण स्ट्रेटेजी है, जो कैपिटल, टेक्नोलॉजी और नए मार्केट अपॉर्चुनिटी को साथ लेकर आता है. आवश्यक अप्रूवल और क्लोजिंग कंडीशन पूरी होने के बाद ये ट्रांजैक्शन हमारी कमर्शियल कैपेबिलिटी को मजबूत करने में मदद कर सकते हैं और कंपनी के नेक्स्ट फेज ऑफ ग्रोथ को सपोर्ट कर सकता है. हमारा फोकस स्ट्रॉन्ग एजुकेशन, डिसिप्लिनेड कैपिटल एलोकेशन, बेहतर मार्जिन और सस्टेनेबल वैल्यू क्रिएशन पर बना रहेगा. प्रपोज ट्रांजैक्शन की प्रोग्रेस के साथ हम इन्वेस्टमेंट कम्युनिटी को लगातार टाइमली अपडेट देते रहेंगे. थैंक यू. Now I invite our CS, Mr. Mandar Desai, to say vote of thanks. Thank you all investors, analysts, shareholders and other stakeholders for participating and for the constructive question and discussion. Thank you. Have a very good day.
All right. So since this is our first ever earning call on VRIGHT Exchange, it deserves a little honesty. I'm so sorry for the early stage technical hiccups that we had during Q&A session, and there was some audio and unmuting issues. So we sincerely apologize for the inconvenience and truly appreciate the patience of all our investors and analysts who stayed with us. Thank you so much on behalf of Make Refrigeration Ltd and Arena Matasko. That concludes today's conference call. Thank you for joining us. Thank you, everyone. You can disconnect now your lines. Thank you so much.